Hello friends, welcome everyone. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର important session ରେ welcome to this fantastic session. ବହୁତ important part କୁ ଆମେ cover କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଏ ଯୋଉ marathon class 3 ତ actually ଭାବିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେରେ ସରିଯିବ ବୋଲି 1 2 ହେଇକି 3 କୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବଟ୍ ବହୁତ important ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ତିନିଟା ଯାକ ଇକ୍ୱାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ପାର୍ଟକୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ନୁହଁ ତିନିଟା ଯାକ ପାର୍ଟକୁ ଦେଖିବ ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନଲେଜ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି ସହିତ ନର୍ମାଲ ପେଡାଗୋଜି ପାଇଁ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଦରକାର ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପାର୍ଟଟାକୁ କଭର କରୁଛେ ଯୋଉଠି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ରେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ଆଜି ଲର୍ନର ଆସେସମେଣ୍ଟରୁ ୱେଲକମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ Learner assessment is an important part of learning support system. Good evening, pranam samstanku, pranam swagat. Jayanta Itisri, Archana Swagatika, Amaresh, Pragya, Shurya Narayan, Priyanka Bharati, Mona Lisa, Samastanku Swagat and assessment कहले important part of learning support system बोली कहले assessment for learning is all about informing learners of their progress all about informing learners of their progress to empower them to take necessary actions to improve their performance. The assessment द्वारा हमें necessary actions नौचे जा द्वारा performance improve करछे improvement देखा जाउछे performance रे assessment teaching and learning are inextricably linked as such informs the others. देखो आसेसमेंट टीचिंग और लर्निंग परस्पर सहित परिपूरक क्या छाड़ी कहीं कंप्लीट हो पारे बिना टीचिंग रे लर्निंग हेनी बिना आसेसमेंट रे भी टीचिंग हो पारे लर्निंग परफेक्टली हो पारे तो assessment during teaching learning process is to provide necessary and timely feedback assessment kon provide kurchi timely and necessary feedback to learners parents and teachers for further improvement आगो को केमती improvement करा जाई पारिबो से ता सहित related फीडबैक प्रोवाइड करछि काहाकू लर्नर को पेरेंट्स को और टीचर्स को मध्य ओके सीसी सबटू इंपोर्टेंट कांसेप्ट एंड इंप्लिकेशन कोन रही तारो देखिबा कंटीन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन जहा को हमें कहूचे जहा को सीबीएसई इंट्रोड्यूस करथिला कंटीन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन refers to system of school based evaluation of students that covers all aspects of students personality. It is particularly initiative attempting to shift emphasis from mere testing to holistic learning. ତେଣୁ continuous comprehensive evaluation କାହାକୁ importance ଦଉଛି importance ଦଉଛି holistic learning କୁ all round development କୁ importance ଦଉଛି ଯଦି evaluation କୁ ଯିବା according to JW Wrightstone evaluation is a new technical term introduced to design a more comprehensive concept of measurement comprehensive concept of measurement evaluation होछि अच्छा तो evaluation जते बेला हमें भी evaluation व्हाट आसुची एटा गोटे कोन आज अच्छा 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 इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस बोली कहा जाउछ होल लर्निंग प्रोसेस रा इंटीग्रल पार्ट बोली कहा जाउछ एंड ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स केते हासिल होला सेटा हमको जणाई दउछ It is concerned with all-round development of students' personality pertaining to cognitive, affective, and psychomotor objectives. तीनटा डोमेन हमें जानिए क्या कौन क्या cognitive, affective, psychomotor. Cognitive deals with head, affective deals with heart, and psychomotor deals with hand. Thus, providing general impression of learner's ability and improving teaching learning process. तो यह द्वारा teaching learning process improve करे and to the mark पहुंचे सीसीई टा कौन अच्छा नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 जानिछे 68 आगे आसला तापर 86 आसला ये प्रपोज करथिला कंटीन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन दैट इनकॉर्पोरेट्स बोथ स्कॉलास्टिक एंड नॉन स्कॉलास्टिक बा co-scholastic aspect of evaluation the total span of the instructional process but teaching learning process रे both scholastic और non scholastic aspect रे सीसीई हुए बा कंटीन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन हुए कंटीन्यूअस माने कोन
regularity of assessment, frequency of unit testing, diagnosis of learning gaps, use of corrective measures, retesting, and constructive feedback of evidence to teachers and students for their self evaluation. Continuous माने कौन continuous term टा जितने आसिला सेतବେଳେ एई जिनसटा आसिला कौन regularity of assessment आउ कौन आसिला frequency of unit test आउ कौन आसिला diagnosis of learning gaps ए सब काहे की करा गला so that corrective measures हमें नहीं परिबा corrective measures कौन कोठी problem अछि ताको find out करि परिबा एवं सेही दिगरे जो problem अछि से problem को solve करि परिबा and छुआ को आगु को नहीं परिबा feedback of evidence कंस्ट्रक्ट करि परिबा टीचर स्टूडेंट समस्त निज को इवैल्यूएट करि परिबे टीचर इवैल्यूएट करिवे टीचिंग प्रोसेस रे कोठी कमी रहि गला स्टूडेंट इवैल्यूएट करिवे लर्निंग रे कोठी कमी रहि गला एही पई आसला कंटीन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्प्रेड ओवर द एंटायर एकेडमिक सेशन अच्छा मीनिंग ऑफ कंप्रेहेंसिव कोन कंटीन्यूअस तो बुझी गले जे कंटीन्यूअसली चलीवार अछि कंप्रेहेंसिव माने कोन attempts to cover both the scholastic and co-scholastic aspects सेही पई को गला कंप्रेहेंसिव. It is not limited to only curricular or scholastic aspects, but co-curricular and co-scholastic aspects. So that student ro holistic development हे परिबो, holistic development of child's progress हे परिबो. ये हला CCE रो continuous और comprehensive. एठी कोन अछि variety of tools and techniques को यूज करा गला assessment पई जहा द्वारा different learner or different area of learning को जानी पारे like knowledge understanding application analysis evaluation and creation सब एरिया को देखा गला 360 डिग्री डेवलपमेंट को देखा गला ऑल राउंड डेवलपमेंट को देखा गला होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखा गला करिकुलर को करिकुलर को देखा गला स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक को देखा गला एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मध्य इक्वल इंपोर्टेंस दिया गला लाइक करिकुलर स्कोर्स सहित स्किल्स को मध्य इंपोर्टेंस दिया गला ऑब्जेक्टिव कौन सीसी रो काहे की कंटीन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन आसिला यार मुख्य उद्देश्य कौन लक्ष्य कौन ऑब्जेक्टिव्स कौन टू lay emphasis on thought process and de-emphasize on memorization तेणु मु कहउतली कौन कहउतली रोट लर्निंग रो हमें शिफ्ट कले कोठी की राइट लर्निंग को यस नो रोट लर्निंग रो राइट लर्निंग रोट कहले मेमोराइज करि दबा घोषि दबा मेमोराइजेशन राइट लर्निंग कहले थिंकिंग हमर जेमते मु कहितली कोन थॉट प्रोसेस बा थिंकिंग प्रोसेस को हमें इंपोर्टेंस दबा एम्फसाइज दबा बुझिबा को इंपोर्टेंस दबा देन घोषिबा अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपोर्टेंट देन मेमोराइजेशन concept clarity is more important than rote learning got it to help develop cognitive psychomotor and affective domain जेमते मु एबे टिके पूर्व कहली CAP एठी CPA लिखाई छी आउ किछ नै to use evaluation as a quality control device to maintain desired standard of performance the evaluation होची quality control device and to make अच्छा quality control device माने कोन evaluation माने हमें क्वालिटी ता जानिले क्वांटिटी भी जानिले हां जते बेले हमें क्वालिटी बा क्वांटिटी जानू छे सेते बेले ताको कंट्रोल करबा माने कोन आउ टिके बेटर केमती क्वालिटी आसीबो बेटर लर्निंग आउटकम केमती आसीबो बेटर अचीवमेंट केमती आसीबो सेटा को हमें कहूचे कंट्रोल डिवाइस तेणु बेटर अचीवमेंट पाई कोन करबा दरकार सेटा करियो to make process of teaching and learning learner centered activity एटा आरटी भी कहितला एबे ये भी कहूची सीसी तो बारंबार हमकु मने पकई दिया जाउची जेमती रोट रु राइट लर्निंग को शिफ्ट करूची सेमती हमर प्रोसेस ऑफ टीचिंग टा टीचर सेंट्रिक रु लर्नर सेंट्रिक को शिफ्ट करूची टीचर टू लर्न गॉट इट very good next to make evaluation an integral part of teaching learning process रे evaluation गोटे integral part continuous comprehensive evaluation जो कोन हैला आमे हमर भूल कोठी अछि ताको रेक्टिफाई त कले ता सहित जो भय थिला टेस्ट को नै कि परीक्षा रो जो भय एग्जाम फोबिया एटा को धीरे धीरे कोन कर दिया गला रिड्यूस कर दिया गला सो दैट पिल्ला परीक्षा पहले डर लेनी
that is also important. बहुत भय, बहुत अधिका भय is not good for anything. Fear is not a good thing. सामान्य नुह जे साप आगे जाकि नागिन डांस करिवो हाँ ए जो गोटे गोटे वीडियो वायरल होची जंगल हाथी रोड क्रॉस कला बेले तांको आगे जाकि नाचिवो गाँ भीतर को पशि आसले तांको पछरे गुड़ेइबो हाँ तो एठी फियर टिके दरकार भी to use evaluation for improvement of students achievement and teaching learning strategies on the basis of regular diagnosis followed by remedial instructions. The remedial teaching ସେତେବେଳେ ଦବା ଯେତେବେଳେ diagnosis କରିଦବା diagnosis is a kind of test ଯାର result ଆସିଗଲା evaluation ର ଫଳରେ and ଯାହା result ଆସିଲା ଆମେ ଆମର ଭୁଲଟା ଜାଣିଲେ and ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର remedial teaching ଦିଆଗଲା ବା remedial instructions ଦିଆଗଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା specific area of difficulty ଟାକୁ ଆମେ reduce କରିଦେଲେ problem को ଆମେ solve କରିଦେଲେ learning outcome better आनीपारे and सब difficulties को reduce करदेले बा zero करदेले schematic and अच्छा scholastic कौन है co-scholastic कौन एगुड़ा बहुत concept important terms ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ this session is important. I don't know how much important you are feeling but मते feel होचे तम important बोली भाभी पारुछ so that you are joining जदियो ये pure theory pure भाषण गोटे लेक्चर मेथड रे पढ़ेला वाला पढ़ौची किछि मजा नाही किछि मस्ती नाही कंक्रीट नॉलेज रो क्लास बट स्टिल यू आर हियर बिकॉज मसला नाही बिना मसला रे भी तमे क्लास करी परछो सेटा बहुत बड़ जिंस हां ओके scholastic aspect include curricular or subject specific areas whereas co-scholastic areas include life skills co-curricular activities attitudes and values. So scholastic कहले curricular को बुझले subject specific को बुझले bookish knowledge को बुझले curriculum syllabus रे कोन अछि से अनुसार पढ़िबा को scholastic aspect कहले co-scholastic कहले life skills co-curricular activities co-scholastic रे जाउछि attitude value develop करिबा निजो भितरे सेटा होछि कोन co-scholastic. Assessment in scholastic area is done informally and formally using multiple techniques of evaluation continually and periodically. Diagnostic evaluation takes place at the end of unit or term test. The cause of poor performance in some units are diagnosed using diagnostic test and followed with appropriate intervention followed by retesting. But assessment co-scholastic area रे कोन होछि is done using multiple techniques on the basis of identified criteria while assessment in life skills is done on the basis of indicators assessment and checklists. तो देखिबा co-scholastic को केमति करा जाउछि assessment आउ scholastic को केमति करा जाउछि scholastic को diagnostic evaluation द्वारा करा जाउछि diagnostic test द्वारा करा जाउछि performance को देखुचे at the end of the unit or term test रे हमें एटा को जानि परुचे but co-scholastic रे हमें देखुचे तारो life skill ओके तागु को बढ़िबा एबे function of CC कोन CC रो काम होउछि children can know their strengths and weaknesses छुआ तारो strength और weakness जानिबा निहाती दरकार so that तारो strength ऊपर से काम करके आहुरी strong करि परिबो and weaknesses को reduce करके ताको strength रे convert करि परिबो yes it provides the child a realistic self assessment of how he studies तो सीसी द्वारा ताकू रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट करिवार मौका मिलिला गोटे अछि सेल्फ असेसमेंट आ गोटे अछि पीयर असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट माने निजे मिरर आगे किया हे गलो ये हला सेल्फ असेसमेंट पीयर असेसमेंट हला तमे आउ तम फ्रेंड सामना सामने ठिया हला तमरो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को तम फ्रेंड कहिला एंड तमे तार स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को ताकू कहिला ये होछि इवैल्यूएशन पीयर इवैल्यूएशन बा पीयर असेसमेंट हमें कहि परिबा सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट एठी सीसी द्वारा छुआ निजे रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट करि परिबो निजे को जानि परिबो वेरी गुड ए सब लाइफ स्किल्स जोड़ा अमूल कुल कहउछन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग क्रिएटिव थिंकिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ए सब जिंस आसुची ओके इट हेल्प्स टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी सीसी द्वारा से
आमे केमिति इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीटा कौन कले भल हम केमती बेटर आउटकम आसो आमे निजको क्वेश्चन करि परिबा एंड तार सॉल्यूशन बाहर करि परिबा कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन हेल्प्स इन रेगुलर असेसमेंट कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन सर्व्स टू डायग्नोज वीकनेस एंड permits the teacher to ascertain an individual learner's strengths and weaknesses and her needs provides immediate feedback तेणु सबुठु इंपोर्टेंट होची कोन फीडबैक मिलिबा फीडबैक काहा को मिलिबा दरकार निहाती दरकार लर्नर को आउ से अनुसार निश्चय दरकार टीचर को टीचर और लर्नर जदि दी जण जाक तांकर स्ट्रेंथ और वीकनेस ता जानि गले कोठी मॉडिफाई करिवे टीचर तांकर टीचिंग मेथड रे आ कोठी मॉडिफिकेशन आनिबो लर्नर तार लर्निंग मेथड रे बा तार स्ट्रेंथ को केमती आउरी स्ट्रंगर करिवो एंड वीकनेसेस को स्ट्रेंथ रे कन्वर्ट करिवो अच्छा आउ कोन इंपोर्टेंट जिंस अछि एबे आसिला पूरा लाइन को पळे आसीबा पूरा मेन पॉइंट को पळे आसीबा फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट को फॉर्मेटिव असेसमेंट जानि छ इज ए टूल टू कंटीन्यूअसली मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन नॉन थ्रेटनिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर्मेटिव टा कोन असेसमेंट फॉर लर्निंग तो असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव रो हम कोन मिले फीडबैक मिले इट इज डन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सेति माइटी कहिछि फॉर्मेटिव असेसमेंट्स कैरिड आउट ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन and it is supportive environment or non threatening environment माने कहिला congenial environment बा suitable environment बा productive flexible environment भितरे ताकू fear free zone रे रखी की punishment free zone रे रखी की तारो डेवलपमेंट करिबा ताकू सब प्रकार सपोर्ट्स दबा एज ए फैसिलिटेटर it can improve student performance tremendously while raising the self-esteem of the child and reducing workload of the teacher. तो एठी मेन इंपोर्टेंट पॉइंट होची कि छुआ भितर मोटिवेशन पळे आसीबो ट्रेमेंडसली काम करिबो परफॉर्मेंस ट्रेमेंडस हबो नॉन थ्रेटनिंग हे गला सपोर्टिव एनवायरनमेंट हे गला तो ताकू गोटे स्पेसिफिक वे रे काम करिवार निजर डेवलपमेंट पई प्रोत्साहन मिलि जिवो इट इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट्स being an essential part of assessment and it involves regular descriptive feedback this is most important F for formative F for assessment for learning F for feedback तीनटा F अछि 3F formative assessment रे feedback मिलिबो and आकु कहा जाय assessment for learning formative for feedback characteristics कोन it builds on students prior knowledge माने previous knowledge and experience in designing what is taught जहा पढ़ा हबो ताहा तांकर previous knowledge बा prior knowledge बा already जानिथिबा ज्ञान सहित connect कर दिया जो it helps students to support their peer group and vice versa student ता peer group को support करिवो peer group student को support करिवे तो ये गोटे एमतिया cooperation collaboration way रे चलिबो डेवलपमेंट हबो समस्तंकर it encourages students to understand the criteria that will be used to judge their work diagnostic and remedial एथरे मध्ये रहउची diagnosis भी होची और remedial भी होची काई कि हमको फीडबैक मिलुची और फीडबैक मिलिला माने इमे निश्चय ता ऊपर किछि चेंजेस आनुचे बा परिवर्तन आनुचे जा द्वारा बेटर अचीवमेंट हे परिबो enable students to adjust teaching to take account of the results of assessment result कोन हैला ना 80% अच्छा राम से 35% रखी हरि 40% रखी गोविंद 90% रखी गोपाल 95% रखी तो ये देखिबार अछि रिमेडियल टीचिंग काहाकू दरकार एनरिच्ड एनवायरनमेंट काहाकू दरकार आ एवरेज की अछि से अनुसार आगु प्लान करिवार अछि बा एडजस्ट टीचिंग टू टेक अकाउंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट रो रिजल्ट को देखिकी निजर टीचिंग स्ट्रेटजी रे आनिबा परिवर्तन it offers an opportunity to students to improve their work after they get the feedback निश्चय feedback पर गोटे opportunity मिले so that कोन करा जाय परिबो better achievement आनिबा को चेष्टा करा जाय परिबो okay thank you for all your additional knowledge it provides a platform for the active involvement of students in their own learning student माने केते involve भेले actively सेति पई प्लेटफॉर्म टा प्रोवाइड करावला काहे कि ना एठी कोनोसी भय नाही फियर फ्री एनवायरनमेंट दिया गला टूल्स एंड टेक्निक्स बहुत इंपोर्टेंट एथरु क्वेश्चन एते आसे जे मु काई कहबियो बहुत आसे
फॉर्मेटिव असेसमेंट पाई टूल्स एंड टेक्निक्स कोन टूल्स रे कोन आसी टेक्निक्स रे कोन अछि बहुत गुडे प्रॉब्लम हे जाए बेले बेले पिलांकु पचारे जे टूल्स कोटा और टेक्निक्स कोटा तो टूल भितर देइतिबो से पचारथिबो अनेक्डोटल रेकॉर्ड टा टूल ना टेक्निक तो तुम कंफ्यूज हो जाओ पूरा टूल कोटा टेक्निक कोटा एठी ताकू डिफरेंशिएट कर दिया जाइछ दिस इज वेरी इंपोर्टेंट वन एथरो क्वेश्चन आसे जे टूल्स कोटा टेक्निक्स कोचा व्हिच इज ए टूल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट कहथिबो ता भीतर देथिबो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन असाइनमेंट्स एलोकेशन बा क्विजेस एंड कंपटीशन तुम पागल हे जो मुंडो खराब हे जो बसे जानि परिबोनी आंसर क्वेश्चंस को नहीं कि तो एग्जामिनेशन एबे एग्जामिनेशन टा किंतु टेक्निक ऑफ क्वेश्चन टा किंतु टूल एबे असाइनमेंट्स भी क्विजेस एंड कंपटीशंस भी ये सब टेक्निक रे जाउछ किंतु क्वेश्चन कहि देला बेलकु ये टूल रे जाउछ तेणु ए फरक टा देखि नै था जानि था बुझि जाई था हां अवेलेबल ऑनलाइन एक्सप्लोरिंग गोल्स सो जो माने भी वीडियो को लाइक करना निश्चय लाइक कर दे तो बढ़िया एडवर्टाइज कर ना एडवर्टाइज नहीं ब्रांडेड जिनस एडवर्टाइजमेंट दरकार हुए ऑटोमेटिक लोकों भितर पिलांक भितर क्रेज थाए ही नहीं कि और छाड़ बहादुर कथा ये किंतु क्वेश्चन आसले भूल करिवनी नेक्स्ट जीवा आउर एपटे कोन अछि टूल्स रे रहि जाइछि टेस्ट इन्वेंटरीज पोर्टफोलियो एनालिसिस रेटिंग स्केल और पोर्टफोलियो भी क्वेश्चन रे आसे ग्रुप डिस्कशन हला क्लब एक्टिविटीज हला रिसर्च हला इक्विपमेंट्स सब जाउछि तमरो टेक्निक्स रे तो टूल्स और टेक्निक्स भितर फरक ता जानि परलो कि टेक्निक रे कोन जिंस नाही किंतु टूल्स रे गोटे जिंस अछि जो जिंस को नै कि टेक्निक यूज करि पारे किंतु चेकलिस्ट होची इंटरव्यू शेड्यूल होची ऑब्जर्वेशन शेड्यूल एनेक्डोटल ये डॉक्यूमेंट एनालिसिस सब स्पेसिफिक जिंस पोर्टफोलियो रेटिंग स्केल टेस्ट एंड किंतु ग्रुप डिस्कशन क्लब एक्टिविटी रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स कौन से स्पेसिफिक जिंस विषय कहूनी तो ये टेक्निक्स गोटे टेक्निक आम टूल्स किंतु गोटे जिंस टूल्स माने कोन ए जिंस पत्र को नेकी टूल्स होची किंतु टेक्निक ता कोन ताको व्यवहार करके जोटा हम करूची ओके तो देखि दो ठीक बोलसे It is advised that within each term, schools use the paper pencil test only once for assessing students' performance and under formative assessment. Formative टा सब बड़े जानी था बेटा during teaching learning process में और feedback मिले to both teacher and students. Okay. So next formative assessment can be carried through using multiple modes of assessment such as assignments, quizzes, debate, group discussion, projects या द्वारा formative assessment हे पारे formative assessment करिवा पई व्यवहार करा जाउथिबा टूल्स एंड टेक्निक्स अच्छा क्विजेस टा कोन टेक्निक टा डिबेट टा कोन टेक्निक टा ग्रुप डिस्कशन टेक्निक प्रोजेक्ट्स टा टेक्निक देखो सब टेक्निक रे अछि प्रोजेक्ट असाइनमेंट असेसमेंट सॉरी आ कोन ग्रुप डिस्कशन ए सब आसला ना आ कोन रहि गला ग्रुप डिस्कशन डिबेट डिबेट एलोकेशन थिला और डिबेट्स भी अछि एलोकेशंस भी अछि ओके ठीक अछि सब टेक्निक्स अच्छा देखिए समेटिव असेसमेंट व स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट को आसीबा कि समेटिव टा कोन समेटिव असेसमेंट को कहला असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहीं कि एट द एंड ऑफ ए कोर्स ऑफ लर्निंग हुएटा carried out at the end of a course of learning माने एनुअल एग्जामिनेशन सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऐसे ओके ठीक एटा ऑलरेडी मो पीडीएफ टा प्रोवाइड करि दैछि तम माननकु एप्लीकेशन रे रजिस्टर लॉगिन करि दबो कला परे ई बुक्स एंड पीडीएफ सेक्शन रे जाई कि देखिबो पेडागोजी किबा एजुकेशन एमती कोनोसी गोटे फोल्डर भितर एटा फास्ट रे थिबो वर्तमान पाई फास्ट अछि तापर नो अपलोड हेला सेटा तळु खसी जीवो दिस इज अवेलेबल इन फ्री रे अवेलेबल अछि किछ असुविधा नै आराम से पाई जीवो it certifies the level of achievement only at a given point of time the level of achievement को ये देखौछ बा लर्निंग आउटकम को ये देखौछ एलो को देखौछ it encourages learn and forget syndrome and produces enormous stress and anxiety among the learners एटा नेगेटिव पॉइंट तार एनुअल एग्जामिनेशन नेगेटिव कोन ए वर्षर परीक्षा सरी गला पर गला पाठ पढी कि खाइ देले भी किछ असुविधा नै किंतु परीक्षा रे घोषित कि मार्क रखियो अछि रे बाबू
Okay, it measures of sum of how much a student has learned from the course, usually graded test माने at the end of teaching learning process हुए तो ग्रेड कौन मिलला रे तोर B1 मिली अच्छा B1 वाला तू हो तोर कौन मिलला रे मोर C मिली तोर कौन मिलला रे मोर A1 मिली अच्छा ए सब ग्रेड्स रे पास करिछु एटा ग्रेड असाइन करा जाय at the end of teaching learning process जे yes formative टा during teaching learning process जो फीडबैक मिले समेटिव टा एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो गोटे ग्रेड असाइन करा जाय परसेंटेज दिया जाय मार्क्स दिया जाय ओके तो सेटा होची समेटिव असेसमेंट तो बुझीगल फरकटा फॉर्मेटिव रो हमको फीडबैक मिले ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुए मंथली टेस्ट हो यूनिट टेस्ट हो चैप्टर वाइज टेस्ट हो वीकली टेस्ट हो ए सब जीव तुम फॉर्मेटिव टेस्ट रे किंतु समेटिव रे जीव सेमिस्टर एग्जामिनेशन एनुअल एग्जामिनेशन जोटा गोटे ग्रेड गोटे मार्क गोटे रैंक असाइन करबा को छुआ को काम रे आसे बुझीगल अब डायग्नोस्टिक टेस्ट असेसमेंट एज लर्निंग डायग्नोस्टिक टेस्ट रे कोन हुए डायग्नोज करिबा स्पेसिफिक एरिया ऑफ डिफिकल्टी को छुआर जो एरिया ऑफ डिफिकल्टी फाइंड आउट कला परे ताको रिमूव करिबा पई टीचर जो टीचिंग दियंती ताको कहै छै रिमेडियल टीचिंग तेनु डायग्नोस्टिक असेसमेंट सहित रिमेडियल टीचिंग ता कनेक्टेड डायग्नोज कले एरिया ऑफ डिफिकल्टी पाई गले और ताको रिमूव करिबा पई रिमेडियल टीचिंग देले खत्म ओके फीचर्स ऑफ समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोली कहा जाए बोली टिके पूर्व तुमको कहली ऑफ नहीं कि तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग कोटा समेटिव टा जनरली टेकन बाय स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ ए यूनिट और सेमेस्टर और डेमोन्स्ट्रेट द सम एठी यूनिट कहबाटा ठीक हबनी यूनिट टेस्ट को हमें नहीं परिबा फॉर्मेटिव बट यूनिट जदि यूनिट टा जदि बड़ यूनिट और यूनिट कहले गोटे चैप्टर को माने पूरा सब्जेक्ट को बुझौछि सब्जेक्ट रो एंटर होछि बेले बेले यूनिट भी कहि परिबा बट इट मैटर्स किंतु सेमेस्टर और एनुअल एग्जामिनेशन इज द राइट टर्म फॉर समेटिव असेसमेंट मेथड्स आर द मोस्ट ट्रेडिशनल वे ऑफ इवैल्युएटिंग स्टूडेंट वर्क एटा पूरा ट्रेडिशनल वे किछि परीक्षा हो न हो वर्ष शेष रे गोटे परीक्षा होतला हम बेले भी अपियरली एनुअल परीक्षा हुए टूल एंड टेक्निक्स Tool and techniques of the assessment includes objective type question, long type question, short answer type question. तो बुझी गलो एमती आसे तो परीक्षा रे हाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ये सब टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करा जाए कोथि पई समेटिव असेसमेंट पई तो असेसमेंट रो मेथड टूल्स एंड टेक्निक्स को वर्तमान में स्टडी करिवा एठी मु कहि दउची इवैल्यूएशन इज एन इंपोर्टेंट डिसीजन मेकिंग सिचुएशन टीचर जजमेंट करे का विषय रे स्टूडेंट विषय Data technique of evaluation are important components of the process of continuous comprehensive evaluation. Tools and techniques of evaluation. तो कौन टूल्स एंड टेक्निक्स टूल कौन टेक्निक कौन या विषय वर्तमान देखिबा स्टैंडर्डाइज्ड कौन और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कौन टूल्स को डिवाइड करा जाई पारे दी प्रकार रो गोटेला स्टैंडर्डाइज्ड और गोटेला नॉन स्टैंडर्डाइज्ड ओके क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल क्लियर अछि समस्तंकर थिंकिंग आउ थॉट प्रोसेस ठीक से चलछि यदि हमें आगु बढ़िबा किछ असुविधा नहीं The standardized tools have the attributes of objectivity, reliability, validity, and quality of discriminating between high and low performer. तो ये गोटे जिनस रहा ऑब्जेक्टिविटी गोटे रहा रिलायबिलिटी गोटे रहा वैलिडिटी एगुड़ा कौन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट क्वालिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन हाई एंड लो परफॉर्मर भितर फरक करेई पारुथो स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट inventories like intelligence and aptitude test interest and study habit inventories attitude skills etc considered standardized tools non standardized रे टीचर मेट टेस्ट रहिला टीचर मेट टेस्ट ता कोन हे जाय स्टैंडर्डाइज्ड कोन जोटा हमरो मैट्रिक रो एग्जाम होला मैट्रिक परीक्षा 20 तारिख रो स्टार्ट हो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पूरा समस्त पे गोटे क्वेश्चन टीचर मेट टेस्ट कोन से स्कूल रे बना जाउची एटी कोनोसी प्रकार स्पेसिफिक नियम कानून को फॉलो करा जायनी टीचर को मन को जहाँ आसला ताको नेकी से क्वेश्चन कले रेटिंग स्केल ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स इंटरव्यू शेड्यूल्स ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स आउ क्वेश्चनरी
opinionaries, checklist etc. होची non standardized. तो एगुड़ा एग्जांपल गुड़ा जानिथिबा कथा केवल टूल्स एंड टेक्निक्स रे जदि हमें देखिबा ताले questions are the most commonly applied assessment tool for finding out what the children know, think, imagine and feel. तो एठी देखो क्वेश्चन थिला टूल्स रे एठी देखो ना कोड गला टूल्स रो फर्स्ट लिखा हिचे क्वेश्चंस तेणु क्वेश्चंस होची सेही टूल्स जे की हेल्प करची कोथि पई टू फाइंड आउट दैट व्हाट चिल्ड्रन नो, थिंक, इमेजिन एंड फील. ऐसे टाइप हो, ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट आंसर हो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो. चलुनी की वीडियो चलछि तो काई एमती चिन्ह देला हो ठीक अछि. एनीवे तमर किछ प्रॉब्लम हेइ थाई पारे. एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके ऑब्जर्वेशन गोटे कोन ऑब्जर्वेशन टा कोथरे जाउछि टूल्स एंड टेक्निक्स रे अछि. हां अच्छा एठी देखो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल. तो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स रे हमर सेकंड रे जोटा अछि टूल्स रा एटा गोटे टूल रे जाउछि. हां ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स रा एडवांटेजेस कोन recognize करिवारे हेल्प करछि. आइडेंटिफाइंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई करछि. टेक्निक्स लाइक debate, allocation, group work, practical laboratory activities, projects, fields, school prayers in clubs, festivals can be used. Techniques रे test and inventories. Oral tests are best suited to assess the depth of learning where students has difficulty in writing expression. Writing रे जार problem अछि ता पे oral रे हमें पचार देके जानि पड़छि. Advantages होछि helps to test listening and speaking skills. Used to test certain verbal abilities like fluency, expression, accuracy. Used to test depth of learning of the students through probing questions. Seventy checklist corner is primarily an instrument of data recorded and documentation. In this type of item, students are provided 2 or 3 alternatives. Checklist. Okay. Advantages corner quick and easy to implement. Provide specific information about specific objectives. Checklist can be useful for classroom assessment because they are easy to construct and use. तो माने चेकलिस्ट माने देखो एमते एमते टिक मारिबार थाए एटा अछि सेटा अछि चेकलिस्ट. चेकलिस्ट माने बुझछो तो तमे मन कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई जाइछो तमरो मैट्रिक सर्टिफिकेट मैट्रिक मार्कशीट +2 सर्टिफिकेट +2 मार्कशीट +3 सर्टिफिकेट +3 मार्कशीट ओएसएसटी सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट से सर्टिफिकेट आरो सर्टिफिकेट तो एमते अछि न नै जो टिक मारा जाय चेकलिस्ट दैट इज कॉल्ड चेकलिस्ट. एंड रेटिंग स्केल्स कोन a response or a learner behavior is likely to be in continuum from excellent to bad. माने फर्स्ट थिबो बैड तापरे एवरेज तापरे सैटिस्फैक्टरी तापरे गुड तापरे एक्सीलेंट. तो ए भितर चूज करवाटा होची रेटिंग स्केल्स बा रेटिंग्स दवा 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार ये होची रेटिंग स्केल्स. Portfolio is the बुझछो तरे पोस्ट a portfolio is a collection of evidence of students work over a period of time. तमरो अचीवमेंट कोन से सब को over a period of time जा करिछो. It could be day to day work or selection of the learners best piece of work. तो एटा होची इंपोर्टेंट जानि था पोर्टफोलियो रे बेस्ट पीस ऑफ वर्क्स थाए. बेस्ट पीस ऑफ वर्क तुम जीवन रे कोन कोन कलो. हां ये स्कूल रे पढ़ला बेले स्टेट लेवल सम कंपटीशन अटेंड करथिला सेठी थर्ड हेतिला. ये +2 रे पढ़ला बेले डिबेट कंपटीशन रे स्टेट को रिप्रेजेंट करथिला. ये सेठी सेटा करथिला एठी एटा करथिला. बेस्ट पीस ऑफ वर्क को पोर्टफोलियो रे हम रखुची. 10th रे ये केते मार्क रखिला +2 रे सेते मार्क रखिला पीजी रे गोल्ड मेडलिस्ट. Advantages of portfolio. It provides a cumulative record of growth and development of a skill or competence in an area over a period of time. It enables students to demonstrate to other his or her learning and progress. तार केते लर्न करिछि आ केते प्रोग्रेस करिछि तार अचीवमेंट्स को देखैबारे हेल्प करे portfolio.
Include करे photographs, paintings and other examples of artistic endeavor, audio visual recordings, self assessment sheet, parent assessment sheet, এটা বেশি দিয়ে দিলা ফোলিওটা, representation of collaborative approach to assessment, emphasize that students can be rather than what they cannot do. ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରୁନି ବୋଲି ଭାବିକି କେବଳ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି, ଆଚିଭମେଣ୍ଟସକୁ ଦେଖୁଛି କେବଳ, କେତେ ଭଲ କରିଛି, ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନ୍ ରିଡିଂ ରାଇଟିଂ ସ୍ପିକିଂ ଲିସନିଂ as well as cultural understanding ରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କୁ। provides a detailed picture of strength and weakness of area of learning of pupils। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟା କ'ଣ, या द्वारा आमे तारो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानी पारुचे और से अनुसार ताकू दे पारुचे कोन रिमेडियल टीचिंग फॉर द डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन टू ऑल हिज डिफिकल्टीज। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर यूजफुल द टीचर्स फॉर इंग्लिश फॉर मेनी रीजंस। अच्छा, इंग्लिश रे काई की कहला आइडेंटिफाई कॉजेस ऑफ स्लो प्रोग्रेस अमंग पुपिल, काई की स्लो प्रोग्रेस होची, डिफिकल्टी टा कोन, locate specific weakness in area of linguistic skill, provide proper feedback to pupils, place the pupils properly in the learning process of English, heighten the efficiency of teaching learning process। तापर आसला डीटी कोन एटी बरा लिखा है analysis of complex performance into components of skills, माने गोटे कॉम्प्लेक्स टाकू कंपोनेंट छोटे छोटे कंपोनेंट रे करके ताकू सॉल्व केमती करबा, डायग्नोसिस करछ हम। डेवलपिंग टेस्ट जेमती अरे डॉक्टर कोन करंती रोगर डायग्नोसिस करंती तो सेमती टीचर भी रोगर डायग्नोसिस माने टीचिंग रा कोठी असुविधा अछि तार डायग्नोसिस करछन। डॉक्टर डायग्नोसिस कला बेले कोन दियंती मेडिसिन, टीचर डायग्नोसिस कला परे कोन दियंती रिमेडियल टीचिंग, जोडा एटी आरटी लिखिछि रिमेडियल टीचिंग। तो यार माने होची रेक्टिफाई, इम्प्रूव और रिमेडी समथिंग। कौन दरकार रिमेडियल टीचिंग टा, हेल्प टू pupils who need pedagogical didactic assistance, these pupils often function a lower than average level of because of काहे कि सेमान को एवरेज बा लोअर देन एवरेज परफॉर्मेंस रहे, तार रीजन होची पुअर मेमोरी, difficulty in understanding, weak in problem solving power, need more time, mix things up easily, poor comprehensive power, information grasp effectively करूनी, easily distract हो जाउची, आउ confidence रो अभाव अछि। तो रिमेडियल टीचिंग रो मुख्य उद्देश्य वा लक्ष्य कोन, it aims to lay the foundation of pupil lifelong learning केमती हे परिबो, help them to develop positive attitude, values and well as well as prepare them for future studies and career, developing genetic skills develop करिवार हेल्प करूची, and तारो जो भय अछि तारो जो कॉन्फिडेंस रो लैक अछि सेटा को डेवलप करेबारे हेल्प करूची, बा तांको भीतर क्रिएटिविटी, थिंकिंग और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल टा डेवलप करिबारे हेल्प करूची। एडवांटेजेस कोन रिमेडियल टीचिंग रो, fill the gap of learning, provides reinforcement, rectify the concepts that have been misunderstood, सेटा को चेंज कला, मिसअंडरस्टैंडिंग टा को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेले, provide correct and necessary foundation और प्रोसेस ऑफ लर्निंग को फास्टेंस कले, फास्टेंस माने और इजियर कले, एंजॉयिंग कले। तापर असला स्ट्रेटजीज फॉर रिमेडियल टीचिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, जो पिलार जो एरिया रे प्रॉब्लम अछि से पिलार से एरिया रो प्रॉब्लम को रिमूव करबाटा होची इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। का पई कोन दरकार, इंडिविजुअल को फोकस करले इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। पोर्टफोलियो बेस्ड वर्क को शो करे, रुब्रिक्स रे टीचर हां छुआ को रेट करे, एग्जैक्टली ओके। हां डिबेट कंपटीशन रे कोन हुए, रुब्रिक्स द्वारा कोन हुए, रेट करबा छुआ को ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट, वॉइस स्किल। हां एबे डिबेट कंपटीशन होची, डिबेट कंपटीशन रे टीचर 1 टीचर 2 टीचर 3 तीन जण अछंती जज हिसाब रे, से मार्क दे दे गले, ये मार्क दे दे गले, ये मार्क दे दे गले, ये
आड करके सब फाइनल मार्क फर्स्ट सेकंड थर्ड में बाहर कले रुब्रिक्स द्वारा हो प्रोसीजर ऑफ आरटी रिमेडियल टीचिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अंडर अचीवर्स करिकुलम अडॉप्टेशन फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग प्लान रिमेडियल टीचिंग पाई गुडा सब दरकार सेटिंग ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट तापरे बिहेवियरल ट्रीटमेंट असेसमेंट रिकॉर्ड एसु असेसिंग स्किल्स तो एठी आसला असेसिंग स्किल्स रे तमरो एलएसआरडब्ल्यू लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग तापरे स्पीकिंग एगुडा सब स्किल एगुडा सब इंपोर्टेंट स्किल्स को स्किल्स एगुडा सब असेसिंग स्किल्स जे कोनोसी नॉलेज को जे कोनोसी जिंस को जानिबा पई हेले सब जिंस दरकार लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स ओके एतिक जिंस हां तापरे अदर टाइप्स ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग मु कहि देली ऑलरेडी फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग सॉरी ऑफ लर्निंग होची समेटिव जोटा एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वे एनुअल और सेमेस्टर कथा कहले असेसमेंट फॉर लर्निंग होची फॉर्मेटिव जोठु हमकु मिलुची कोन फीडबैक असेसमेंट एज लर्निंग होची डायग्नोस्टिक जोठी छुआर लर्निंग डिफिकल्टी को हमें फाइंड आउट करछे और रिमेडियल टीचिंग द्वारा ताकू एंड करछे इन लर्निंग कोन contributes to construction of other learning activities line of inquiry and generation of other questions assessment in learning the process भितर आउ किछि भी करिया को पड़े जाको असेसमेंट इन लर्निंग बोली कहूचे लर्निंग चली थाए इंक्वायरी चली थाए जनरेशन जनरेशन ऑफ अदर क्वेश्चंस भी चली थाए इंडिविजुअल असेसमेंट he she is doing an activity or task thus recognize individual work and accomplishment वन स्टूडेंट ऊपर फोकस करा जाए इंडिविजुअल असेसमेंट प्रति छुआ को असेस करबा होची इंडिविजुअल असेसमेंट ग्रुप असेसमेंट गोटे गोटे ग्रुप रे डिवाइड कर देले हमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स करो किछि टास्क देले आउ से माने केमती काम करछन्ती सेतरे बा ग्रुप भीतर तांकर कोन रोल अछि सोशल स्किल कोन अछि से माने केमती इंटरैक्ट करछन्ती कोऑपरेटिव लर्निंग केमती होची के काहा को सिखै दोची एंड अदर वैल्यू रिलेटेड डायमेंशंस ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर को ग्रुप असेसमेंट कहले सेल्फ असेसमेंट कोन स्टूडेंट्स ओन असेसमेंट मु कहली मिरर अगर ठिया हवा कथा एठी these are learning progress in knowledge skill process interest attitude रे से निजो को निजे जानुची peer assessment कहली तम सांगो आगे तुमको ठिया कर दवाटा it refers to one student assessing other children this can be conducted in pairs or in groups गोटे छुआ प्रियंका पूर्णिमा हरप्रिया संजय झरणा सत्य समस्त मिसिक ताको ता विषय रे असेस करबा को ताको असेस करबाटा को हमें कहले ग्रुप असेसमेंट किंतु प्रियंका और पूर्णिमा को असेस कले पूर्णिमा प्रियंका को असेस कले दिस इज आल्सो peer assessment some terms आसिला जो टू क्वेश्चंस बहुत आसे या पर सरियो ओके तो हां एटा तो अलगा पाठ हे गला 80 सरियो some terms is the last part of this session मुझे जाने ना कहां बातों aptitude test होची test to discover and measure the potential of an individual for specific abilities and skills such as music science medicine teaching graphic etc तो एठी aptitude test कहले टीचिंग aptitude पढुचे टीचिंग aptitude माने कोन टीचिंग रे छुआर कोन अछि पोटेंशियल अछि केते ताकू कोन करचे मेजर करचे बा डिस्कवर करचे बुझि गलो ना ना अमोल को छाड़ तुम एडवांटेज रिसर्च कर लिखियो उच्चना नहीं पियर असेसमेंट ऊपर जतबेले तुम रिसर्च पेपर पब्लिश कर बही लिखियो ना पियर असेसमेंट को नेकी बही 400 पेज रो सेतबेले से गुडा लिखियो पियर असेसमेंट अरे सर टिके इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आसीवार चांस थाए ना अमूल कुल गोटे रास्ता रे चलछ दी जण जाको से सुना अंडा हो कि अमूल कुल हो हाथ तरा धरी कि बढ़िछ पढ़िछ तेणु रडुछ भी हो हां कौन कोटा करछ ना कौन मारी भी ना एरिया छाड़ी पळेबो हो ये गला एप्टीट्यूड टेस्ट तापर नेक्स्ट पार्ट को जीवा
holistic assessment. Assessment includes both scholastic and co-scholastic aspect. Scholastic aspect भी ଆଉ co-scholastic aspect भी ହେଲେ holistic assessment କହୁଛେ ବା holistic development କହୁଛେ। ତାପରେ ଆସିଲା intelligence test. It is the test which assesses the student's ability to perceive relationship, solve problems, apply knowledge in a variety of ways. ବୁଝିଲ ତ? Intelligence test କ'ଣ? Student ର ability to perceive relationship, solve problems, apply knowledge in variety of ways. ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି intelligence. Prognostic test ସମସ୍ତେ କହୁଥିବ ଏ ୱାର୍ଡଟା ଆସିଛି ରେ କହୁଛ ଏମିତି ନା? Prognostic test କ'ଣ ରେ ଏଇଟା ଆସିଛି ତ ଆସିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଗୋଟେ ଜାଣିଯିବା। It is test meant for foretelling, prediction and forecast designed to predict the student's ability and readiness to understand the study. ये prognostic test होଉଛି तुलसी दुई पत्रରୁ ବାସୁଛି କି ବିଛୁଆତି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ଆବିଲିଟି ତାର ରେଡିନେସ୍ କୁ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିବ ଇଏ ହେଉଛି prognostic test. Self reporting technique. This is technique which is used to find out the response of the respondent to questions concerning their characteristics, behavior. Students are required to express their likes, dislikes, fears, hopes, ideas about specific aspect. ହେଲା self reporting ନିଜ ବିଷୟରେ କହିବା ନିଜ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା କ'ଣ likes କ'ଣ dislike ଏ ବିଷୟରେ। ଓକେ ନିହାର ବାଳା ଓକେ ଅନନ୍ତରାଣୀ ହଉ ଅଛ ସବୁ ଅଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ସବୁ ଅଛ ହଉ। ତାପରେ ହେଲା semantic slanting. ଏଇଟା ବି ୱାର୍ଡଟା ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଆଗରୁ। It means using and crafting words carefully to one's own advantage. ତ ଏମିତି ଜୀବନ ଏମିତିଆ ୱାର୍ଡସକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି so that ନିଜେ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିବ। Achievement test ହେଉଛି it is administered at the end of the language course. End of the test ଏଠି ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା ଆମେ ପଢୁଛୁ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୋର୍ସ ଲେଖିଦେଇଛି end of any teaching learning processରେ achievement testକୁ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ସରିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଯାହା ଅଛି ଏଇଟା କିଛି କହୁନି ହୋମ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଏଗୁଡ଼ା ପିଓରଲି ତମର ଯାହା ରହିଲା ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜିର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ସରିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବ and ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ହିଟ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିବ। ୟା ପରେ ଯାହା ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ପିଓରଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଯାହାକୁ ମୁଁ କେବେ ପୁଣି ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅଛି and ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅଛି। I have shared this ଏ ପିଡିଏଫଟା ପୁରା ତମେ ପାଇଯିବ with theory and all 123 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସର ସହିତ ପାଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପରେ ଆପକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିନିଅ आपको इंस्टॉल करने सहित आपको हमर इंस्टॉल एंड रजिस्टर लॉगिन कला पर फ्री ई बुक्स एंड पीडीएफ्स पार्ट रे अवेलेबल अछि। धन्यवाद समस्त को थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। धन्यवाद thanks a lot. Take care, stay connected with exploring goals to explore your goals. Keep exploring, keep inspiring. Thank you. Dhanyawad. Many thanks for joining this fantastic session, making it superb. And your active participation is really admirable. Dhanyawad samastanku. Good night. Take care.